Hello and welcome everyone to our YouTube channel Techlorz. My name is Titan and today we're going to be talking about an AI called Midjourney. It's basically used to create AI images. So we're going to take a journey through that Midjourney AI and let's just go ahead and dive right into it. All right, so let's just start with Midjourney and first of all, we're just going to go ahead and open up the home page of Midjourney. So just go ahead and type in midjourney.com on Google और आपके पास ये होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है ज्वाइन द बेटा वर्जन। और इसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपके पास आपका डिस्कॉर्ड का एक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि ये एआई सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ही चलता है। इसका दूसरा वर्जन जो एप्लीकेशन वर्जन है वो अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया। So Midjourney is just on Discord and you can go ahead and create your Discord account if you don't have one. Otherwise, you just have to, whatever browser you're using, first of all, just open up Discord, sign in, and then you have to go ahead and open up Midjourney here, join the beta version, and it will just automatically prompt you to this Discord. अभी आपको ये accept invite करना है. Okay. अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आप ह्यूमन हैं या नहीं. Obviously, क्योंकि हम AI पे काम कर रहे हैं तो पूछेगा ही. So you're just gonna go ahead and do that. Verify. Perfect. It's just loading now. Okay, finally. So अब ये लोड हो चुका है और अब हमें क्या करना है, हमें जाना है इसके चैनल्स में और हमें इसके चैनल्स में जाना है और हमें ढूंढना है न्यूबीज का चैनल। और अगर आपको यूज नहीं करना था तो आप गेटिंग स्टार्टेड पे भी जा सकते हैं। पहले गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे तो यहाँ पे उसने बताया सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यूबीज के चैनल पे जाना है और इस चैनल पे जाके आपने, बाय द वे, channels are just these tabs here. So if you're getting confused, these are just these tabs here I'm showing you right now. So getting started के टैब पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको कि आपने यहाँ पे टाइप इमेजिन करना है और जो भी आप सोच रहे हैं आपने उस प्रॉम्प्ट में लिखना है और वो आ जाएगा। So let's just go ahead and try that out. Newbies के चैनल पे जाएंगे हम and let's just type in imagine, enter, and now let's just go ahead and imagine something, right? I'm gonna go ahead and type here, okay, so futuristic, samurai, okay. Now I've entered my prompt and प्रॉब्लम मिडजर्नी के साथ ये है कि ये फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन में उस चैनल में बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आपने जब भी प्रॉम्प्ट एंटर किया होता है वो ऊपर चला जाता है, तो आपको वो ढूंढना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, लेकिन फ्री वर्जन में हम इनको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो मेरी क्वेरी बहुत छोटी सी थी and now first it's saying that we have to accept TOS and resend. I think अब इसने मेरी जो क्वेरी है
वो पोस्ट कर दी होगी। अगर नहीं की तो हम दोबारा करेंगे। ओके, अब ज्वाइन हुआ है। So it was just asking me to, this is the tricky part with Midjourney, because you enter something and it just goes right above, so it just goes away and you are unable to locate that. Imagine futuristic. Oh my god, my spellings are a mess today. Got it. So ये है वो prompt हमने जो अभी अभी पोस्ट किया था, और ये हमारे पास बन के आ चुका है। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं ऊपर वाली रो में, और 4 ऑप्शंस दिए नीचे वाली रो में। जो ऊपर वाली रो में जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आप चूज करेंगे तो वो वाला इमेज, इन चारों ऑप्शन में से वो वाला इमेज वो आपको अपस्केल करके दोबारा पोस्ट करेगा इसी चार्ट में। And the second row, it's just for the variations of the image you choose. So basically आप जो image choose करेंगे, फर्ज करें मैं यहाँ से 4th image choose करता हूँ। I chose this, and now it's just gonna post there 4 new variations of the variant I chose. You have to scroll down a little. Yep, here it is. So I chose the variant and it just gave me 4. Oh, okay. Yep, here it is. It was just right here. Yep, here it is. So these are just the 4 variants of the variant we chose. And if you want to upscale one of these, you are just going to go ahead and select, if you want to choose the first picture, just go ahead and click on U1. U1 पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो U1 का वेरिएंट आपको अपस्केल करके दे देगा। अब ये जो मैंने इसको जॉब दी है वो ये कर रहा है। It's taking some time. So basically जब तक ये लोड कर रहा है, इसकी एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक AI है और बेसिकली अभी ये फिलहाल कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री मिलता है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल लेते हैं, तो दिस इज जस्ट अ फ्री ट्रायल, एंड इफ यू वांना use that to its full potential, so like unlimited images, you eventually have to buy the subscription, and it's extremely high. So people don't really go there, people just use different accounts. हमारा image इसने post कर दिया है। अब थोड़ा scroll करके नीचे जाएंगे हम। Yep, it's right here, and we do not want to make any more variations of that. A little upscale would be nice. अपस्केल करेगा और उसके बाद हमें इमेज दे देगा। So basically upscaling is just the sharpening of the image. So if it's like a small image, it will make it a larger size image.
Yep, here it is. So इसको डाउनलोड करने के लिए, no, it's 71%. So let's just wait for 100%. It's 92% now. Perfect. Now you have to scroll down again. It gets really frustrating, but once you get the hang of it, you'll just be fine. Scroll, 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 and here it is. What? Again? Jump to present. So now from the present we have to scroll up because अभी वो ऊपर चला गया होगा. Yep, here it is. अभी इसे डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मिड जर्नी के प्रोफाइल पे. तो अभी हम यहाँ पे जाके मिड जर्नी दोबारा लिखेंगे, मिड जर्नी, and sign in. Perfect. We're just gonna authorize that. No, it just doesn't want to go there. Okay, we sign in again. Great. Here we are. So it's just my other account, and I'm gonna go ahead and sign out of that, and then sign in again. Yep. Trevor, authorize. What's wrong with it? All right, so for some reason it's not, logging me in. I'm gonna go ahead and put you guys on a brief hold, and I'll be right back. All right, guys, so I'm here back again. एक्चुअली मसला ये आया था कि मेरे ईमेल पे उसने कुछ वेरिफिकेशन के लिए भेजा था और मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया था, तो उसे लॉग इन नहीं कर पा रहा था. So basically I did that, and now we're just gonna go ahead and open up Midjourney again and sign in, and perfect. It just signed in and it's asking me to authorize again. Sign in, and here we are. So this is my Midjourney's profile, and these are the pictures we created, and this was the one we upscaled. You can go ahead and simply open up this upscaled version and save. So it's going to save the picture in your computer, in your local device, and we are done. So we need to do further upscaling on this image, but we cannot do here on Midjourney. But there are some other softwares we can talk about in future videos. So for now, we are done with Midjourney, and I hope you guys enjoyed the video and learned something new about the world of AI, because it's expanding vastly. And I hope you guys are going to go ahead and deep dive into the Midjourney and other AIs as well, because the future is AI. All right, so take care, you guys, and I'm going to go ahead and sign off now.